Class 10th, question number 10. A piggy bank contains 100 50 paise coins, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins, and 10 rupees 5 coins. Dot if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 paise coins and second will not be a 5 rupees coins? यहाँ क्लास 10th का क्वेश्चन जो 10 है उसमें पिगी बैंक जो बनाता है 50 पैसे के कॉइन्स 100 हैं और 1 रुपये के कॉइन्स 50 हैं और 2 रुपये के कॉइन्स 20 हैं और 5 रुपये के कॉइन्स 10 हैं। ये सारे इक्वली लाइक वन ऑफ कॉइन्स विल बी फॉल आउट। इनमें से एक कॉइन्स हम चूज़ करते हैं या निकालते हैं। द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, तो इसकी क्या संभावना होगी, प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, विल बी 50 पैसे कॉइन्स और सेकंड जो है 5 रुपीज़ कॉइन्स ना हो, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्व करने की स्टार्टिंग करते हैं। हेयर सॉल्व इट। ए पिगी बैंक कंटेन्स, क्या क्या कंटेन्स हैं वो देखेंगे। जैसे कि नंबर ऑफ 50, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स 100 है और नंबर ऑफ रेट्स 1 रुपीज़ कॉइन्स जो है वो 50 है और नंबर ऑफ रेट्स 2 रुपीज़ कॉइन्स भी 20 and 10 5 rupees coins is 10. Number of rates 5 rupees coins will be 5 rupees coins will be 10 10. तो टोटल आउटकम्स हुआ 0 5 2 7 8 and 1. Total possible outcomes is equal to 180, which is equal to our NS, यानी कि number of sample space is 180, so will be 50 paise coins. Let even be favorable outcomes of getting 50 paise coins. See coins. लेट किया हमने, इवन जो है हमारा फेवरेबल आउटकम से, जो कि गेटिंग 50 पैसे कॉइन्स, क्योंकि हमें पूछा गया है विल बी 50 पैसे कॉइन्स। सो हेयर 50 पैसे कॉइन्स, सो PE इक्वल टू
PE1 oblique PS, which is our favorable outcomes. The favorable outcomes of 50 favorable outcomes of 50 paise and upon the total the total number of sample space sample space sample space. So our here is 50 rupees coins is probability events is equal to 100 and total outcomes is 180. So we out here 100 upon 180, 0 0 cancel, and again 10 by 18 divide by 5, 5 to the 10, 2 5s are 10, 2 5s are 10 and 2 9s are 18, 2 5s are 10, 2 9s are 18. So we there will be contain 50 paise coins. Probability 50 paise coins will be 5 oblique 9, 5 oblique 9. So this is our first answer, and second is that will not be 5 rupees, will not be 5 rupees. So here second will not be 5 rupees, will not be 5 rupees, will not be 5 rupees. लेट करेंगे यहाँ भी, let E2 be the favorable outcomes comes of getting favorable outcomes of getting not be a rupees 5 coins. There E2B favorable outcomes of getting not 5 rupees coins. There are 5 rupees coins is here. Number of 5 rupees coins is 10. So we out of 5 rupees coins, so we get not a 5 rupees coins here, not a 5 rupees coins. So 180 minus 10 is equal to not 5 rupees, 5 rupees coins. So outcomes is 170. So we'll write down here PE2 probability will not getting rupees 5 rupees coins
So it not getting probability, it will not getting 5 rupees coins. So there are probability is that favorable outcomes, favorable favorable outcomes upon में total outcomes. So here 170 oblique 180 170 oblique 180 is equal to 0 cancel, so we get 17 oblique 18. This is our answer, which is not which is not which is not rupees 5 coins, getting rupees 5 getting is equal to which is not 5 getting, probability is 17 by 18. 17 by 18 is the answer. Here question is that another question, 11 question. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? क्वेश्चन दोबारा हम समझते हैं. गोपी जो है बाय करती है फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम के लिए, वो अपने. द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश रैंडम फ्रॉम अ टैंक. जो दुकानदार है उसने अपने टैंक से एक मछली निकालता है. कंटेनिंग, उसके पास 5 मेल फिश है एंड 8 फीमेल फिश है. तो प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है कि द फिश टेकन आउट ऑफ ए मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है. तो हम इसे सॉल्व आउट करते हैं, जो कि बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं. देयर लिखेंगे यहाँ पर कि कितने हमारे पास मेल फिश है और फीमेल फिश है. तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व आउट. हेयर द नंबर ऑफ मेल फिश be 5, number of female fish, aquarium, shop is aquarium, random, a tank contain 5 male fish and 8 female fish. Female fish is 8. So the total number of fish is equal to 8, 5, 13. So total sample space is 13 number. So let करेंगे यहाँ पे, let E be favorable outcomes of getting a male fish,
male fish. So here probability events is equal to the probability of male fish. So P is the probability of male fish. Probability events is equal to the number of favorable outcomes upon में number of favorable outcomes, number of possible outcomes, number of possible outcomes. So possible outcomes, the number of favorable outcomes हमारा मेल है, तो नंबर ऑफ मेल जो हो गया हमारा पी ई इजकल टू 5/13, तो ये हमारा आंसर। अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मेल फिश हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ फीमेल फिश 8 है, टोटल नंबर ऑफ फिश जो है 8 5 13, नंबर सैम्पल स्पेस 13। लेट ई बी द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग मेल फिश। प्रोबेबिलिटी इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। पी ई द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारे पास क्या है 5/13, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। हेयर क्वेश्चन नंबर 12 इज ए गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest point at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that if it will be point at 8, second is an odd numbers, third is a number of greater than 2, a number is less than 9. So हमने क्वेश्चन को समझा। A game consists spinning arrow which comes to a rest point. So हम एक गेम बनाते हैं। Here this is points and we have divided 1 2 3 4 काउंट कर लेते हैं। हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. There are numbers 1 2 3 4 5 6 7 or 8. There will be moving arrow. Here game consists of spinning arrow which comes at rest point at a number, the number of sample space is 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो हम लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ possible outcomes in the game possible outcome in the game is 8. Let E be favorable outcomes of getting 8. Let E be the favorable outcomes of getting 8. So probability event is called E be the favorable outcomes of getting 8. So our first question is there 8 favorable outcomes. The number of getting 8. So PE is equal to probability of getting 8 is equal to number of favorable outcomes upon में total number of possible outcomes. Total number of possible outcomes. So we see here NE1 is equal to 8 जो है वन टाइम आएगा हमारा। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आएगा वो क्या होगा NE1 अपॉन NS यानी कि 1/8। 8 आने की जो संभावना हमारी होगी 1/8 चांस होगी। सो दिस आवर क्वेश्चन एन odd number तो देयर फेवरेबल एन odd नंबर लेट करेंगे यहाँ E2 be the favorable outcomes of odd numbers. So odd number is that here 1, 3, 5 and 7. 1, 3, 5, 7. So NE2 is equal to the favorable outcomes upon total number of sample space.
is equal to 4/8, which is Ne2 is equal to probability E2 upon my Ns. So 4/8 is equal to 1/2. 1/2. Again repeat, an odd number. Let E2 be the favorable outcomes of odd numbers. So 1, 3, 5, 7. N is the favorable outcomes upon my total number of sample space 4/8. तो Ne2 is Ne2 अपॉन में Ns. Ne2 जो है हमारे 4 ओड नंबर्स है और N सैम्पल टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो है या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 8 है. तो 4/8 1/2. ए नंबर ग्रेटर देन 2. सो लेट करेंगे फिर यहाँ लेट E3 be the favorable outcomes of greater than 2. Greater than 2 is the number is 3, 4, 5, 6, 7 or 8 numbers. 8 numbers. So here there are any 3. The favorable outcomes oblique the total number of outcomes is equal to Ne3 upon Ns. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and total outcomes is 8. So we solve it. 2 Ne3 is equal to 6/8. 6/8. So 2 is equal to 6/8. 2 3 is 6. 2 4 is 8. So Ne3 is 3/4. Question number 4 is question number 4. Question number 4 is that here a number less than 9. A number less than 9. So less than 9 less than 9. तो so we let करेंगे इसे. Let E4 be the favorable outcomes of a number less than 9. So these numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो लिखेंगे Ne4 the favorable outcomes upon total number of sample space. Total number of outcomes. Total number of outcomes is equal to Ne4
is equal to n e4 oblique ns. So there are 8 oblique 8 is equal to 1. This is our answer. So let the number of less than 9, let e4 be the favorable outcomes of a number less than 9. So our outcomes is 1 2 3 4 5 6 7 8, and favorable outcomes, our total number of outcomes 8 by 8 is equal to 1. अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट ए die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number laying between 2 and 6, and odd numbers. ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं. ए die is thrown, लेट सॉल्व करते हैं. ए die is thrown, तो our outcomes is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 6. There question number first is that a prime number, there is a prime number. So let करते हैं हम, let e1 be a prime number, So prime number is that 2 number, 3 number and 5. These are prime numbers. So हम लिखेंगे यहाँ पे probability events. प्राइम नंबर, तो probability event 1 is equal to any 1 oblique में ns, the favorable outcomes upon total number of outcomes. So here there are 3 prime numbers and oblique में 6. So probability is that PE1 is 3 by 6, 3 by 6, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 1 by 2, 1 by 2. Second is that a number laying between 2 and 6, a number laying between 2 and 6. तो लेट करेंगे हम, लेट e2 be a number laying between 2 and 6. So PE2 is equal to 2 3 4 5. So PE2 here, PE2 is equal to favorable outcomes upon में total number of outcomes. Total number of outcomes oblique 3 by 6. So probability events
favorable outcomes is equal to 3 by 6 is equal to 3 by 6, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 1 by 2. Third is an odd number, so let E3 be a odd number. Odd number is that 1 3 1 3 and 5. 1 and 3, E2 odd number is, so we'll write down here PE3 favorable outcomes upon my total outcomes. So this is also 1 to 3, 3/6, and so answer is 1 by 2. So PE3 is equal to 1 by 2 probability. 1 by 2 हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक बहुत आसानी से समझा, जो कि हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। इसको अब बार बार प्रैक्टिस करके और भी अपने लिए आसान किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।